Hello everyone, welcome to PTE Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 37th video in this series. It means that we have discussed highly repetitive 36 real exam questions along with the tips, tricks and hacks how you can achieve your target of 84 plus or 66 plus. So let's get started. But first things first, now UK accepts PTE. So if you want to study, work on settle in UK, you can do it through PTE. And now 90% of Canadian universities accept PTE academic. And if you're applying for family visa in UK, you can go for PTE Home. This is a new test and you can get your family visa through PTE Home also. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. अब स्टूडेंट्स पूछ के हैं सर कैन वी ऑल्सो स्कोर 84 पॉइंट्स? द आंसर इज बिग येस। चाहे आपका टारगेट 50 हो, चाहे आपका टारगेट 46 हो या फिर 66 हो या 84 हो, यू हैव टू रिमेंबर दैट पीटी आपकी टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे आप इजीली क्लियर कर सकते हैं. So that's why do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. Coming to the PT reading, आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करना होता है. इंटीग्रेटेड टाइमर होता है पूरे मॉड्यूल का and the time is 32 to 41 minutes and it has 5 question types. Now a common misconception जो students को है that it is scored out of 90. The answer is no, it is not scored out of 90. The reading module we are going to see how much it is scored from. And the reading filling the blanks जो आज का टॉपिक है वीडियो का, it is second last question in this order and this is the real PT scoring. अगर आप ध्यान से देखिए जो reading module है आपका, it contributes only 47 or 48 marks, but उसमें से reading filling the blanks 15 marks in your reading. तो अगर आपके 5 questions आते हैं 3 marks each के होंगे वो, ताकि 15 total बन सके. Okay, so I hope this is clear. And what is our strategy? First of all, we have to solve our reading filling the blanks in 2 to 2.5 minutes. अब क्या इस टाइम में आप सारे वर्ड्स को समझ सकते हो? क्या सारे वर्ड्स पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए? The answer is no. What you need to do is you have to learn the art of skimming, and this is something which we teach to our students, online students as well as in-institute students. So this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds to skim through this and then we are going to discuss it. Okay. So you know that what is the first step? We skim it to understand the tone, tense, gist, right? And parts of speech for our options which are given. So tone positive है, negative है, neutral है या academic है. Tenses में past tense है, present tense है या future tense use हो रहा है. Gist means overall idea, किस चीज के बारे में बात हो रही है. And parts of speech, very important concept of grammar. We are going to see that, but for options if we can quickly see कि आपके कौन से nouns होंगे, कौन से verbs होंगे, कौन से adjectives होंगे, it gets easy to solve your answers. Okay, so first of all let's do the skimming. One of the world's 7 remaining species of marine turtles almost have been pushed to some levels. Okay, hunting, habitat loss, plastic pollution, climate change, and accidentally being caught in fishing nets continue to threaten the something of these large and long-living creatures. Shell Beach, named after the shells that form its 90-mile something, is a vital nesting ground for 4 of these marine turtle species. Okay, so turtles के बारे में हो रहा है. Hunting वगैरह के कारण, fishing के कारण काफी threaten हो रहे हैं. और फिर किसी शेल बीच की बात हुई है जो कि नाम आया है उसका 90 माइल समथिंग और वो उनका नेस्टिंग ग्राउंड है. ओके, फॉर 4 ऑफ दीज मैरीन टर्टल स्पीशीज. सो अब आपको आइडिया हो गया, टर्टल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उनके हैबिटेट के बारे में बात हो रही है.
नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज अगर हमें इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है बहुत बार इजी हो जाता है हमें सॉल्व करना। तो एंगेज्ड क्या होता है आपका? एंगेज्ड हम जनरली एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, ओके, राइट। आई नो, अब आप कहोगे सर ये वर्ब है, ईडी लगा हुआ है, बट इट्स यूज्ड एज अ एडजेक्टिव आल्सो, ओके, राइट। एक्सटिंक्शन, अगर आपने हमारी ग्रामर क्लासेस अटेंड की हुई है आपको पता है जितने भी वर्ड्स शन में मेंट में एंड होते हैं जनरली वो वर्ब्स होते हैं, ओके। एक्सटेंट नाउन है, एग्जिस्टेंस भी आपका नाउन है। इंडेंजर्ड, अब जैसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, अगेन दिस इज एडजेक्टिव चाहे ईडी लगा हुआ है। स्टैच्यू नाउन है, स्पीशीज नाउन है। अब लिविंग, लिविंग को आप एज एडजेक्टिव एज वेल एज नाउन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग या फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स। इस केस में लिविंग स्टैंडर्ड्स जो आपके हो गए हैं, राइट, दिस इज द एडजेक्टिव फॉर स्टैंडर्ड्स। लिविंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है और ये नाउन की तरह भी यूज होता है। Why we do this, you are going to see in a short while. So let's first solve the blanks. अब यहाँ पे you know the strategy. We read 3-4 words before the blank, 3-4 words after the blank. So almost all have been pushed to some levels. Means जो ये turtles हैं, almost all मतलब 90%, 95% pushed to which levels? We can also use process of elimination and I call process of elimination best friend forever. इसमें हम wrong answers को eliminate करते हैं और we are left with the right answers. अब remember we have done parts of speech for our options. अब levels क्या हैं? Noun है, ठीक है, plural noun है। नाउन से पहले क्या आता है? अगर आपने हमारी ग्रामर क्लासेस अटेंड की हैं यू नो नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। सो अब इसमें एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? एंगेज्ड है, ओके, इंडेंजर्ड है, ओके, राइट। तो अब बहुत क्लियरली आपको पता है आपको एक्सटिंक्शन नहीं यूज करना है, नाउन एक्सटेंट नहीं यूज करना, एग्जिस्टेंस नहीं यूज करना, स्टैच्यू नहीं करना, स्पीशीज नहीं करना, लिविंग हो सकता है, ओके। So what you have done, you have eliminated using process of elimination all the wrong options. तो अब आपके पास क्या बचा? Living, engaged या endangered. Now the answer, right? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पे extinction levels नहीं हो सकता। अब दो reasons हैं कि extinction levels आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट रीजन इज दिस, एक्सटिंक्शन आपका नाउन है और हमें क्या फिल करना है? एडजेक्टिव। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो आप वैसे ही उसको एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड रीजन क्या है? लेट्स सी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी इंडेंजर्ड लेवल्स। व्हाई? बिकॉज एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? खत्म हो गए, लाइक डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ओके। बट इंडेंजर्ड मतलब अभी भी, जैसे टाइगर्स हैं इंडिया में, राइट, या वेल्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो इंडेंजर्ड हैं, खत्म होने की कगार पे हैं, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑल हैव बीन पुश्ड टू इंडेंजर्ड लेवल्स, ओके। So let's fill this. I hope the answer is clear why we had this as endangered. You see how we could solve this on the basis of parts of speech. Okay. अब reasons दिए हुए हैं. Okay. But you know that यहाँ पे हम 4-5 words next blank के and 4-5 words after the blank we will read it. But उससे पहले यहाँ पे मैंने पीछे star mark किया था. Why I had marked stars over here? This is again a grammar rule which we teach to our students. जब एक से ज़्यादा word, like in case these are two words, act as an adjective for a single word. जैसे long living adjective है creatures का, 90 mile adjective है किसी चीज़ का, okay? So यहाँ पे आपको hyphens use करने हैं. So I hope this is clear and this is the knowledge which you will gain, which you need to know, because अब आप adjective use कर रहे हो तो adjective के बाद क्या use होगा? Noun use होता है, right? So this is how you must realize how important parts of speech are, जो हम कभी focus नहीं करते हैं जनरली। हमें लगता है ये तो बहुत सिंपल है, क्या करना समझ के, but these are quite important, right? So अब यहाँ पे अब ये जो उन्होंने reasons दे दिए, continue threaten the something of these large and long living creatures, right? Something of these में जनरली अगर आपने हमारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, समथिंग में हम जनरली क्या भरते हैं? नाउन भरते हैं, ओके, राइट। अब हम यहां से क्या एलिमिनेट करेंगे? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करेंगे। तो इंगेज्ड क्या था? एडजेक्टिव था, एलिमिनेट कर दिया हमने। लिविंग भी एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, एलिमिनेट कर दिया।
ओके स्पीशीज। अब यहाँ पे हमारे पास नाउन बचे हैं। ओके मोर और लेस दीज आर योर नाउन्स एंड इन नाउन्स अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या फिल होगा। क्या चीज उनकी थ्रेटन करेगा, जो रीजंस हैं किस मतलब उनकी क्या चीज थ्रेट करेगा, राइट। एक्सटेंट थ्रेट करेगा, एक्सटेंट ऑफ दीज, existence of these, extinction of these, statue of these, या species of these. And the correct answer, this has to be solved on the basis of vocab. ये सब reason किसी की existence threat करते हैं, okay? Existence of these large and long living creatures, okay? So that's how we have filled it. Now you know again that 90 mile is an adjective. Next यहाँ पे आपका क्या fill होगा, noun fill होगा. So now let's read 3-4 words before the blank and 3-4 words after the blank. Shell beach, named after the shells that form its 90 mile something, is a vital nesting ground. Okay? अब आपको पता है engaged नहीं हो सकता है, living नहीं हो सकता है. अब आपको इनमें से ही nouns में fill करना है. अब 90 माइल हम किस तरह से बात करते हैं, 90 माइल एरिया, 90 माइल रेडियस, राइट, 90 माइल डायामीटर. जब हम लेंथ देते हैं तो हमें किससे रिलेटेड बात करनी है, लेंथ से रिलेटेड. ओके 90 माइल क्या है, एक तरह से लेंथ है. सो अब इसमें से क्या चीज लेंथ को, एरिया को रिप्रेजेंट करती है, द आंसर इज एक्सटेंट, राइट. 90 माइल एक्सटेंट. ओके नाउ एक्सटेंट मीन्स जो एरिया है एक चीज का कवर्ड बाय समथिंग. सो एक्सटेंट इज एरिया कवर्ड बाय समथिंग. आई नो जो हम सेकेंड डेफिनेशन हमारे माइंड में याद रहती है, जो हम डिग्री, स्केल या लेवल की बात करते हैं. एक्सटेंट क्या होता है, डिग्री, लेवल या स्केल. बट इट्स ऑल्सो एरिया कवर्ड बाय समथिंग. टू व्हाट एक्सटेंट, ओके, टू लो, राइट. सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आंसर सॉल्व होगा, एक तो नाउन होगा एंड सेकंड कौन सा नाउन होगा इनमें से, एक्सटेंट होगा, बिकॉज वो आपकी लेंथ की, एरिया की बात कर रहा है. एंड एडजेक्टिव से थोड़ा आप प्रिडिक्शन कर सकते हो दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट area. So let's see if all the answers are correct. Yes, as you can see, all the answers which we have selected are correct. Okay, now our reading filling the blank strategy is mainly divided into context, lexical resource and grammar. Context mein we do skimming. You had seen today skimming, how important it is. Then forward reading, backward reading and tone. Okay, these are important strategies to solve your reading filling the blanks. Along with that, in lexical resource, we have collocations, phrasal verbs, as well as vocab. Vocabs is something which you build slowly and steadily, and we have a great list for collocations for our student. And coming to the grammar course, we have a complete 30 lecture grammar course where we teach parts of speech to our students, and you have seen the importance of parts of speech. Then subject verb agreement, prepositions, models, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, sentence formation, all this is being taught to you, and it will help you to improve your writing scores, listening scores, as well as reading scores. Especially if you are looking for 84, 66, it's important that you know the grammar, because without grammar you will not be able to achieve your target score. And always remember, you just have 2 to 2.5 minutes to attempt your reading filling the blank. In first 30 to 60 seconds, you are going to skim the content. आपको content skim करना है, and in next 90 to 120 seconds, you can use process of elimination plus parts of speech knowledge to solve your answers. जैसे you had seen today, we had solved the answers. Okay, and all the strategies which we teach are validated and proven strategies. And scorecards, you can see the scorecards of the students who have achieved their target score, right? And these are some of our recent success stories. If students can score 90 overall, 86, so if these guys can score 84 each, so you can also score. Okay, and this is our WhatsApp number. If you have any doubt, question, want to take online coaching or in-institute coaching, you can call us at 8699 121 121. And do not forget to subscribe to our channel. We give wings to your dreams.